welcome back. It's Jyoti. कैसे हैं आप? What's happening? How's everything? Hope everything is good. I'm back. Arjun. My God. वो दो गाने मैंने क्या cover किए. The comment section was flooded with requests for more songs from this album, and this was one of the most highly requested. So abhi I can cover only one song today. Otherwise, I was gonna cover more. But की करिए हम करेंगे. की करिए हम करेंगे. Because my foot is now hurting, so I have to lift it and sit on the bed. But let me finish this one before I end today's recording session, है ना? So ठीक है. Arjan Dhillon का की करिए. Much A for Arjan. Launch under Panj-aab Records. Single lyrics composer Arjan featuring Swattee Thakur, producer Harwinder Sidhu. Okay. Director Mahi and Joban Sandhu. And ठीक है, चलो, let's just get into it. 1, 2, 3, play. ਹਾਏ ਦਿਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦਾ ਨੀ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਾਏ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਪੈੜੀ ਉਹਦੀ ਲੱਭਦੀ ਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਬਦੀ ਨੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਾਏ ਦਿਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦਾ ਨੀ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਈਏ ਕੱਟਣ ਨਾ ਦਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਐ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਏ ਧੁੱਪਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਈਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੋਈਆਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹਾਏ ਦਿਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦਾ ਨੀ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀ ਕੀ ਕਰੀਏ What was that? What did he write at the end? Oh man. Okay, so I have a few thoughts about this. First of all, I really like the video, the simplicity of it, the ऐसे फूलों से भरे हुए like हरियाली वाली views और खेत तो नहीं कह सकते but landscape हमें फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं, है ना? I loved it. Full Yash Chopra vibes are happening. But every sort of every scene was like frame worthy. So beautifully shot. गाने की जो सिंप्लिसिटी थी और जो राइटिंग में जो सिंप्लिसिटी थी वो बहुत ही स्वीटली वीडियो में उन्होंने उतारी है and I really like that. The model, the actress was really good. So it kept me emotionally connected with the lyrics. I have to say कि इस गाने में मुझे
म्यूजिक अरेंजमेंट थोड़ा समझ नहीं आया बिकॉज द वे ही वाज सिंगिंग was like I would have liked it to be less electronic. I would have liked it to have a little more, कहीं पे हारमोनियम आ गया या कहीं पे थोड़ा वायलिन आ गया. वो थोड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक सिंथ्स और वो सब हो रहे थे अरेंजमेंट में, दैट वाज टेकिंग अवे, स्पेशली इन 2-3 प्लेसेस वेयर आई रियली फेल्ट लाइक ओहो, बट ही सिंगिंग like the melody that he's singing, थोड़ा सा like I don't know, it just थोड़ा mismatch लगा मुझे. And I'm not an expert, but I'm just telling you my honest opinion. And because some of the lines and the way he did a bit of a and it made me smile, but music background me was not facilitating that emotion that was leading me to smile. It was kind of like his voice and his singing is taking me towards the emotion, but the music arrangement is trying to pull me away from it. वो 2-3 जगह पे हुआ. So that's my only thing. But otherwise, beautiful song and such a sweet, sweet, sweet like what do I do? Ki kariye? It's not happening for me. The sort of melancholic musing space of it was yeah, I think everyone has been there. Everyone in some form or another continues to be there. And I feel like us feeling maybe एक beauty है. उस feeling में भी एक sort of आपको सुकून मिलना चाहिए या आपको I won't say joy, लेकिन कंटेंटमेंट और सुकून तो थोड़ा सा मिलना ही चाहिए बिकॉज बहुत कम लोगों को वो फीलिंग्स वाली स्पेस में घुसने का मौका मिलता है. So be grateful for that you're feeling some kind of love and emotions for someone. And a lot of people are so stone cold that they never get to experience that kind of joy and beauty in their life. So always a silver lining, but very sweetly, beautifully expressed and written and sung. I can see why you guys were telling me कि अब आप असली पंजाबी सिंगर्स पे आए हैं और असली पंजाबी संगीत पे आए हैं अर्जुन के गानों के साथ. A lot of such comments I saw, and I have to say कि I can see now why, because ये ऐसी पोएटिक और मेलोडिक सिंगिंग स्टाइल आजकल बहुत कम आर्टिस्ट में रह गई है. And I am loving his vibe because of that. So yeah, very nice. I'm gonna end this here because अब seriously मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है. As you all know, the sprained ankle is still not completely healed. तो वो pain hota rehta hai, so I'm gonna go and put like a heat pack on it and elevate my foot and continue with my bed rest. But thank you so much for joining me, and I will get to the rest of his songs very soon. मेरी पूरी list है यहाँ पे लिखी हुई. Kavita is one other highly requested track, so I'll get to that next. And if there's any other, let me know. Also, a lot of people requested Nawan Sandhu के गाने, so वो भी comment में specify कर देना कौन से गाने, and any other artists, of course. Just specify the song, the exact song, 1, 2, 3 कितने भी गाने, लेकिन song names के साथ आप suggest करिए, तो it becomes easier for me to add them to my list. चलो, on that note, take very good care of yourselves. Live long and prosper. ਹਾਏ ਦਿਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦਾ